hey, what's up guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine and great at your home. So सबसे पहले एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़, जो प्रीवियस मोबाइल था मेरा, I have sold it out and I have bought a new phone. So you can see the camera quality. There is a big difference, big difference. मुझे पता नहीं आप लोग किस में देखते हो ब्लॉग, टीवी में या मोबाइल फ़ोन में. यूजली सब मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, बट मोबाइल फ़ोन में आपको इतना बिग डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. बट आई रिक्वेस्ट यू टू गाइज वॉच इट इन टीवी. आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, बिकॉज पहली बात तो ये वीडियो 4K पे शूट हो रही है. नेक्स्ट, अच्छी ऑडियो क्वालिटी, अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिल रही होगी इसमें, आई एम फॉर श्योर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स किक इन अ वर्कआउट. तो वर्कआउट शुरू करने से पहले आज के वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो ये बेसिकली होम वर्कआउट होने वाला है फॉर ऑल द जिम लवर्स. जो कि जिम नहीं जा सकते वो होम पे वर्कआउट करते हैं, वो ये फॉलो कर सकते हैं. बहुत अच्छा पंप आएगा आपको. सो व्हाट आर वी गोइंग टू ट्रेन टुडे इज़ ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड बाइसेप्स. सो सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर कर दूं मैं कि अगर आपको आपका बिग आर्म चाहिए, बिग आर्म लाइक दिस, अगर आपको आपके बिग आर्म चाहिए, सो बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्राइसेप को छोड़ देते हैं, सिर्फ बाइसेप मारते हैं, लगे रहते हैं बाइसेप मारने में. सो उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज जब तक आपकी ट्राइसेप्स अच्छी हिट नहीं होंगी, जब तक आपकी ट्राइसेप्स बड़ी नहीं होंगी, जब तक आपका आर्म का साइज़ ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा. सो stop focusing more on biceps, start focusing on your triceps and hit biceps twice a week. I am not saying do not hit it, but hit it twice a week in a moderate intensity, but hit triceps mainly and shoulders, because ये सब overall growth maintain करते हैं बॉडी की, जो आपकी बॉडी फिजिक्स सामने वाले को दिखती है. So without wasting our time, so first सबसे पहले वार्म अप करेंगे और उसके बाद we will get into workout. So first exercise for a shoulder is Arnold presses. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, yet बहुत effective exercise. So I am having 7.5 kgs of dumbbell. ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, कोई भी शॉप पे, अराउंड 400 to 500 rupees. So without wasting time, मैं इसका डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे एक्सरसाइज करते. So posture will be like this. घूमना नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसका पोस्चर बनेगा. ओके, सो नाउ थर्ड एक्सरसाइज फॉर शोल्डर विल बी हाफ लेटरल रेजेस. हाफ लेटरल मतलब मैं आपको बताऊँगा अभी. इसमें क्या करना है कि आपको सिंपल यूँ करना है, यूँ. आपने श्रग्स जब यूँ करते हैं श्रग्स, उसके लिए आपको यूँ करना है, बस सिंपल. इससे क्या होगा कि आपने नोटिस किया होगा कभी किसी बॉडी बिल्डर के शोल्डर्स में यूँ हल्का सा ऐसे घुमावट ऐसे होता है यूँ,
हल्का सा एक 3D शेप आता है, वो इसी एक्सरसाइज की वजह से आता है। सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये भी मैंने अभी सीखी, नई एक्सरसाइज एकदम। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। साइड से व्यू दिखाता हूँ आपको। सी माय हैंड्स आर क्लोज टू माय थाइज, दे आर नॉट मूविंग, नॉट माय बॉडी इज मूविंग। सो अपनी बॉडी को नहीं मूव करना है। इट्स अ वर्क ऑफ क्लियरली एल्बोज एंड बाइसेप। ओके, सो नाउ मूविंग टू सेकंड एक्सरसाइज। सेम पोस्चर, कीप योर चेस्ट अप, नाउ हैमर करो। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी ये एक्सरसाइज बताई है, हैमर कर। सो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। बाइसेप्स आर गोना बर्न। प्रॉपर माइंड एंड मसल कनेक्शन। थिंक लाइक आपका जो सारा वेट है वो बाइसेप से उठ रहा है। थिंक कंटिन्यूसली, थिंक लाइक आपका सारा वेट बाइसेप से उठ रहा है, तब जाके माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छा बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप विल बी ट्राइसेप किक पुश डाउन। सो 7.5 kg डंबल, कीप योर हैंड ऑन योर थाइज एंड देन पुश 90 डिग्री यहाँ पे आके, देन पुश बैक, पुश बैक, पुश बैक। यहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड, देन पुश बैक। सेम विद द लेफ्ट हैंड। सो I want all of you to take a dumbbell to chest, till chest, then push it outer side, बाहर की तरफ पुश करो उसे। नॉट लाइक दिस, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा अच्छा से, ऐसा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ, देन आउट, इन, देन आउट, इन, देन आउट, इन, देन आउट, इन। Okay, so that's all for the arm day. So you can see arm is still pumped up. So please let me know how is the quality. अब ये रात के फेज़ में तो आपको क्वालिटी नहीं समझ में आएगी, बट जो दिन दिन वाला फेज़ था वीडियो का, उसमें प्लीज़ लेट मी नो हाउ इज़ द क्वालिटी एंड हाउ इज़ द साउंड. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. डू शेयर इट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, visit to my channel again. Till then, stay tuned.